that do not try to time the market, you try to select good stocks. और वो स्टॉक्स का जब आपका रेट आएगा, आप स्टॉक्स को फॉलो कीजिए, देखते रहिए, और उसका जब रेट आएगा तब आप जाके वो स्टॉक खरीद लीजिए। अगर आपको कौन से स्टॉक लेने हैं ये समझ में नहीं आता है, तो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट बास्केट्स के बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू बाय एनी ऑफ द बास्केट्स। हमारे बास्केट्स है ये 5,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक के बास्केट्स है। यू कैन बाय एनी बास्केट्स। और हमारे जो म्यूचुअल फंड का डेस्क है ये भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने हैं। तो एडवाइस की कोई कमी नहीं है। बाय either you listen on TV advice, you read in newspaper, you ask our staff। तो बाय करने में कोई बड़ा एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द सेल डिसीजन, कि आपका एक तो इन्वेस्टमेंट टारगेट रीच हो गया तो वो आप आइटम को एग्जिट कीजिए और कोई नया स्टॉक लीजिए, या तो आपने जो सोचा था वो उस तरह से वो प्राइस नहीं बढ़े और आपको लॉस हो रहा है, तो आपको एक स्टॉप लॉस का टारगेट रखना चाहिए, और वो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है आपको वो शेयर से निकल जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक आपको मैंने इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी है, और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी कुछ हमने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग ये बहुत ही ग्लैमरस वर्ड है। मुझे याद है कि 92 में जब हर्षद मेहता पहली बार आए थे, लेट 80s में, तो किसी को भी आप पूछो क्या करते हो, ओह मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। करता क्या है, वो स्टॉक मार्केट बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता है और बहुत सारे लोग नीचे खड़े रहते थे, और वो एक दूसरे को पूछते हैं मैं क्या लूं, और वो लेके दिन के एंड में बेच देते थे, या तो अगर उनका प्राइस नहीं आया तो वो बेच नहीं पाते थे। ज्यादातर जब भी बुल रन होता है मार्केट में, तो आप आंख बंद करके न्यूज़पेपर में किसी भी शेयर पे आप अपनी उंगली रख दो तो वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो लोगों को एक एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे शेयर का मैंने आज खरीदा और शेयर का प्राइस बढ़ दिया, या तो मैंने बेच दिया, या तो मैं कल बेचूंगा। तो ये इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मैंने सुबह जाके खरीद और शाम तक उस शेयर का प्राइस बढ़ गया और मैंने वो शेयर बेच दिया। तो ये पहली बात हो गई। What are the different types of trading? So first type of trading is day trading, कि मैंने सुबह शेयर लिया और शाम को शेयर बेच दिया। डे मतलब on the same day I bought and I sold the shares। अभी डे ट्रेडिंग में जरूरी है कि हमने तय किया है कि हम शाम को ही बेच देंगे। तो अगर हम नहीं बेचते हैं और हमको लगता है कि अगले दिन हम बेचेंगे, तो हमको वो शेयर्स की जो परचेज प्राइस है वो हमें चुकानी पड़ती है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू पे द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द शेयर, एंड देन यू शुड बी एबल टू then hold the share for a day and you may sell off the next day. What is this called? Today you buy, tomorrow you sell. That is called BTST, or buy today, sell tomorrow. तो ये एक दूसरे तरह सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग हुआ। पहले हमने किया डे ट्रेडिंग, दूसरा था BTST, एंड विच इज यू बाय टुडे एंड यू सेल टुमारो। ऑफकोर्स इसमें ये रिस्क ये रहता है कि हर बार जब हम परचेस करते हैं तो हमें शेयर की डिलीवरी शायद नहीं आ सके। इसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑक्शन प्रोसेस में जाती है, क्योंकि जो सेलर है उसके पास डिलीवरी नहीं है, या तो उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो डिलीवरी नहीं दे पाया, उसने DI स्लिप साइन नहीं की, कोई भी वजह से द पर्सन हु हैज सोल्ड में नॉट डिलीवर, और वो डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलती है तो यू इफ यू हैव सोल्ड द नेक्स्ट डे, तो आप भी डिलीवरी नहीं दे पाओगे, और फिर वो शेयर आपका भी ऑक्शन में जाएगा। ऑक्शन की पेनल्टी काफी रहती है, आपको एक बाजू से मिल सकती है, दूसरे बाजू से भरना पड़ता है। तो ये दोनों का डिफरेंस में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये BTST इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग दैट हैपेंस। फिर थर्ड टाइप ऑफ डे ट्रेडिंग, इसी को हम आगे चलाते हैं कि मैंने आज लिया कल नहीं बेचा, मेरे पास पैसे थे, मैंने वो शेयर खरीद लिए और मैं अपॉर्चुनिटी की राह देखता रहा। मतलब आई एम वेटिंग दैट द शेयर प्राइस गोज अप एंड आई विल सेल द शेयर
इन ए शॉर्ट वाइल, मीन्स मैं लंबा ये शेयर को लंबा इन्वेस्ट, आई विल सेल इट क्विकली। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब मैंने डिलीवरी ली और मैंने वो डिलीवरी मैंने बेच दी। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच इज हैपनिंग। तो ये हमारे ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है ये कैश मार्केट को लेके है। सो पीपल हु आर इन द कैश मार्केट, those are the kind of people who want to trade in the cash market. These are the three different kinds of trading which is being done by people. और आप भी अगर इन्वेस्टर हो और आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग ट्राई करनी चाहिए, तो आप ये कोई भी 3 मेथड में आप ये ट्रेडिंग की ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट मेथड में आपको डिलीवरी नहीं लेनी होगी, आप सेम डे you will exit the share, but on second and third method, that is BTST and delivery based trading, you will have to take delivery of the shares। और इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास वो शेयर के पैसे हो। और अगर आपके पास शेयर के पैसे नहीं है, तो there is a facility which is provided by a lot of brokers which is called margin funding। मतलब आप सिर्फ शेयर के मार्जिन के पैसे दो और बाकी के जो पैसे है वो ब्रोकर देगा, और एंड ही विल चार्ज यू एन इंटरेस्ट ऑफ 15, 18, 21% डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर। दे में चार्ज यू, दे विल चार्ज यू, नॉट मे चार्ज यू, दे विल चार्ज यू एन इंटरेस्ट फॉर दिस मार्जिन फंडिंग। अगर अगर आप मार्जिन फंडिंग में लेते हो, there are two options। one is the margin funding may be only for 7 days, मतलब आप 7 days तक पोजीशन ओपन रख सकते हो, या तो आप 1 मंथ, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मार्जिन फंडिंग है उसमें मैक्सिमम 1 मंथ तक आप पोजीशन ओपन रख सकते हो, एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट। ऑफ कोर्स यू विल अर्न मनी if the share prices goes up which is more than the interest that you pay। मतलब अगर आपने 100 रुपए के शेयर लिए और उसका समझो 18% इंटरेस्ट है, तो आपका 1.5 रुपया इंटरेस्ट हो गया 1 महीने का। तो अगर आपको रिटर्न मिलता है सिर्फ 50 पैसे, तो आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आपको 3 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 रुपए प्राइस डिफरेंस मिलता है, तो आपको 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस, ब्रोकर के चार्जेस, एसटीटी जो गवर्नमेंट को जाती है, सेबी को जाती है, ये सारे जो चार्जेस है गवर्नमेंट के, सेबी के टर्नओवर टैक्स है, एक्सचेंजेस के चार्जेस है, तो ये सारे चार्जेस इज रफली 0.6%। तो और फिर स्टैम्प ड्यूटी है, यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे चार्जेस को मिला के ऐसा भी हो कि आपको ऐसे लगता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल 50 पैसे का प्रॉफिट है, लेकिन एक्सपेंस ऑन वन साइड इज 0.6 और आपने डिलीवरी ली तो दूसरी साइड भी 0.6 लगेगा, तो 1.2% रुपीस आपका अगर एक्सपेंसेस लग जाता है, तो आपको गेन नहीं मिलेगा, आपको लॉस ही होगा। इसीलिए अगर आपको बहुत ही थिन मार्जिन्स में आपको डे ट्रेडिंग करनी हो, तो डे ट्रेडिंग इज द सेफेस्ट बेट, because you will not end up paying very heavy charges which are associated with delivery। दूसरी बात, डे ट्रेडिंग में ये ध्यान रखनी जरूरी है कि आप अपने पूरे पैसे, मतलब जितना भी आपका पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, मतलब जो पैसे आपकी जरूरत के लिए जो आपने रखे हैं उसको छोड़कर, जैसे कि आपके बेटे के कॉलेज की फीस भरनी है, वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, आपने फीस तैयार करके रखी है, हमको जून में एडमिशन की फीस भरनी है, उसके लिए हमने 5 लाख रुपए साइड में रखे हैं, तो वो पैसे को आप ट्रेडिंग में नहीं लगाओगे। सिमिलरली 1 साल बाद आपके बेटी की शादी है, अभी गोल्ड का भाव बहुत ऊपर है, मुझे ये पैसे से गोल्ड लेने हैं, 10 लाख रुपए मैंने साइड में रखे हैं, तो मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा और ट्रेडिंग में नहीं लगाऊंगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल अपने पास रखना जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, वो जो पैसे आप खो सकते हो, मतलब वो पैसे खोने से आपके परिवार में आपको किसी को भी कोई बड़ी अशांति, मानसिक अशांति, या तो आपका कोई इवेंट फेल होता हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती हो, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ
doing day trading and invest such money which is called as the money which you can afford to lose. मतलब ये पैसे अगर मेरे चोरी हो गए, मेरे कुछ भी हो गए, तो मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे जीवन में या मेरे परिवार को कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे पैसे आपको ट्रेडिंग में रखने चाहिए। और मेरी एडवाइस है कि आप 25,000 50,000 रुपए से आप शुरू कीजिए, और उतने ही पैसे जो आप लूज कर सकते हो उतने ही पैसे आप डे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर अगर आपकी पर्सनालिटी सूट नहीं होती, कई बार लोगों को ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए, एक बार कर लूं फिर देखूंगा। क्योंकि मैं कई सेमिनार्स में जाती हूँ, वहां पे लोग यंग लड़के लड़कियां सब मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं हमें क्रिप्टो करेंसी करना है, या तो किसी ने मुझे कहा कि हमें पियर लैंडिंग करना है। मतलब ये काफी फैंसी कॉन्सेप्ट्स है लेकिन काफी रिस्की है। लेकिन हम कहते हैं ना कि एक बार जब तक हम दिए में अपना हाथ नहीं जलाते तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे मतलब अग्नि की ताकत कितनी है, कितनी गर्म हो सकती है और मुझे क्या हो सकता है। ये सारी बातें जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आती है। तो एक बहुत ही छोटे पैमाने पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो you can do this trading provided you have investable surplus and you can afford to lose it। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। मेरे एक कस्टमर थे और वो हर साल 2.5 से 3 करोड़ रुपए का लॉस करते थे। तो हम उनके परिवार वालों को बोलते थे अरे ये इतना सारा पैसा लॉस कर रहे हैं, तो आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं। ऑफ कोर्स वो बहुत ही अमीर लोग थे, उनके पास 5-10 हजार करोड़ की एसेट्स होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी है और ये सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, इतने सारे फोन करते हैं, वो 90 साल के हैं। तो ही इज रिमेनिंग एक्टिव, हिज ब्रेन इज एक्टिव, ही इज इंटरैक्टिंग विद पीपल। बोले ऐसा अगर कुछ नहीं करते तो ये बैठे रहते और बीमार हो जाते। तो ऐसा है कि उनके पास 2-2.5 करोड़ रुपया है which they can afford to lose, but in return they are getting a very active दादाजी। तो अगर आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि you can afford to lose some money, then only it is advisable to go for this kind of trading। अभी हम लोग एक और बात करते हैं which is we talked about trading in cash। ट्रेडिंग को कई बार हम लोग सट्टा भी मानते हैं। पहले जमाने में जैसे मैं कई सारे इंडिया के ऑलमोस्ट 450 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमी हूँ और स्पेशली गुजरात में कई सारे ऐसे लोकेशंस है जिसकी गली का नाम है सट्टा बाजार गली। तो लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग इज इक्वल टू स्पेक्यूलेशन। तो मैं इसका भी थोड़ा आपको मैं डिफरेंस समझा दूं। ट्रेडिंग ऐसी बात है कि कुछ जानकारी लेकर हमें अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स या किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज अ चांस कि आप उसमें से गेन भी कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी आल्सो इफ यू टाइम इट प्रॉपरली। जैसे मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, सुबह से शाम तक जैसे ही CNBC शुरू होता था वो बैठ जाते थे। तो और मेरे सब स्टाफ के नए लोग पुराने लोग सब उनको फोन करते और उनको बताते थे कि उनको काका बोलते थे, काका आज आप ये शेयर ले लो। इतनी सारी उनके पास दिन में टिप्स आती थी। लेकिन उन्होंने एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों की एक लिस्ट बना के रखी थी और वो लिस्ट में वो ही लिस्ट में से अगर किसी ने जानकारी दी तो वो ही लिस्ट का शेयर लेते थे। और दूसरा ये करते थे कि ये इसमें उनके पास ही हैड इनफ मनी टू टेक डिलीवरी। तो अगर 10 रुपया कोई शेयर का 5 बढ़ा तो वो बेच देते थे और 2-5 घटा तो वो लेते थे। तो ये एक बैंड में वो कंटिन्यूअस बेसिस पे ही यूज्ड टू ट्रेड। So there was information and there is processing, मतलब it is a informed buying decision or a selling decision which a person was making। But when we talk about speculation, speculation का क्या मतलब है कि समझो एक कॉइन टॉस करना है। अभी हमने कॉइन टॉस कर दिया तो there is a probability that it will either be heads or it will be tail। तो जब तक हम कॉइन टॉस करते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने खेल लिया, आपने कॉइन टॉस किया, आपने कोई डिसीजन लिया। लेकिन जब आप कहते हो कि अगर ये हेड्स आया
तो मैं आपको 500 रुपया दूंगी, अगर ये टेल्स आया तो आप मुझे 1000 रुपए देना। या तो क्रिकेट में जैसे बैटिंग होती है कि सचिन तेंदुलकर ये गेम में 100 करेगा या नहीं, या तो विराट कोहली, रोहित शर्मा कितने कैच लेगा, इसकी हाफ सेंचुरी होगी कि नहीं, ये जो सारी बातें हैं, अगर आप क्रिकेट एंजॉय करना चाहते हो तो आप बैठ के आप क्रिकेट एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आप जैसे कहना चालू करो कि अगर सचिन ने 100 किए तो मैं 10 रुपया लगाता हूँ और मुझे 10 के सामने 100 मिलेगा, तो ये एक इम्पोज रिस्क हम आप उसके ऊपर बना लेते हैं। ये रिस्क क्यों इम्पोज हुआ? क्योंकि हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, सचिन ने 100 बनाए, बहुत मजा आया, हमने बहुत तालियां बजाई और इतना एंटिसिपेशन के साथ में हमने एक शॉट देखा, मनाया। लेकिन जैसे ही हमने उसके साथ में एक मनी का रिस्क जोड़ लिया कि ये होगा तो ये पैसे होंगे, तो देन व्हाट हैपेंस इज एनी रिस्क व्हिच यू एसोसिएट विद एन आउटकम, आउटकम क्या है कि हेड हो या टेल हो, या तो या तो कई लोग नुक्कड़ पे खड़े रह के करते हैं, अगली गाड़ी का लास्ट नंबर 4 होगा, 5 होगा, ऐसे भी लोग सट्टा करते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं कि वी आर एसोसिएटिंग रिस्क विद द आउटकम एंड मनी विद द आउटकम, तब वो स्पेक्यूलेशन के जोन में चला जाता है। तो हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को स्पेक्यूलेशन जब कहेंगे जब हम बिना जाने कुछ भी समझे बगैर अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, देन इट विल टर्न टू ए स्पेक्यूलेशन। और जब स्पेक्यूलेशन होता है इट इज प्योरली ऑन चांस, और जब कोई भी चीज अगर प्योरली चांस पे होती है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द आउटकम, टू गेस द आउटकम, टू प्रेडिक्ट द आउटकम। और ऐसी स्थिति में हम हमारे पैसे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये एक आउटकम का एक अंदाजा होना चाहिए, उसका एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये जो हमारा आउटकम है ये होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, और होने की अगर प्रोबेबिलिटी काफी है देन ओनली इट इज पॉसिबल टू डू इट। दूसरी एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं एंड वो ये है कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि ये फलाना शेयर ये ऊपर आज जाने वाला है। मैं आपको मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद में आपको बताऊं कि देयर इज नेवर एनी इंफॉर्मेशन विद द मार्केट डज नॉट नो। सिर्फ मेरे पास इंफॉर्मेशन है और किसी के पास नहीं है, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती है। ऑलवेज मार्केट ऑलवेज नोज एंड देयर इज समबडी और द अदर हु अंडरस्टैंड्स कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, और आपको लगता है कि आप ये इनसाइडर ट्रेडिंग जाके करोगे देन इट इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपको सेबी का इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ आ सकता है। और स्पेशली आप अगर स्मॉल वैल्यू के शेयर्स में ट्रेडिंग करो, क्योंकि बड़े जो शेयर्स है कि रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, ये सबको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बड़े शेयर में बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर हैविंग ह्यूज, पूरी इंटरनेशनल मार्केट है वो भी वो शेयर को ट्रैक करती है। लेकिन जो छोटे मोटे शेयर होते हैं, छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, उसमें क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक्स कम होते हैं उसमें मैनिपुलेशन का पूरा स्कोप होता है और ऐसे छोटे शेयर्स को मैनिपुलेशन किया जाता है। तो आपको ये हमेशा एडवाइस रहेगी कि आप ये छोटे शेयर्स में अगर आपको लगता है कि आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए तो ये फंसने वाला काम है, क्योंकि जो भी आदमी वो शेयर में मैनिपुलेशन करता है जीत उसी की होती है। जैसे आप किसी भी कसिनो में जाओ तो कसिनो वाला ही हमेशा सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, एक हाथ दुक्का किसी का जैकपॉट लगता है लेकिन बाकी तो कैसीनो वाला ही कमाता है। इसलिए अगर हम छोटे शेयर्स में जाके अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी यही हालत होगी कि हम वो, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करने वाला कोई होता है। इसलिए जो बड़े शेयर्स है इसमें अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो यू आर रिलेटिवली सेफ, क्योंकि बड़े जो शेयर्स है इसमें डिमांड और सप्लाई, देयर इज नो थर्ड एलिमेंट। इसमें जो प्राइस का अप एंड डाउन होता है वो ज्यादातर डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। जैसे कि कोई एफआईआई ने आके बड़ा
लॉट ले लिया या किसी ने लोकल पर्सन ने बेच दिया। तो ये जो प्राइस मूवमेंट्स है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो प्राइस मूवमेंट्स में आप अगर आपकी नजर मार्केट पे रही तो आप कुछ पैसा बना सकते हो। तो ये अगेन ये बात जरूरी है कि डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। आपको अगर और कुछ काम नहीं है और आप ये काम करना चाहते हो तो यू विल हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड डू दिस ट्रेडिंग। तो ये हमारी बातें, मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस दिए, एक्सपीरियंसेस दिए, लोगों ने कैसे ट्रेडिंग में पैसे बनाए, और जितने लोगों ने बनाए उससे ज्यादा लोगों ने गंवाए। अभी कुछ समय पहले जीरोधा के सीईओ का इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा कि मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स ट्रेडिंग में पैसा खो के गए हैं। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इज समथिंग where lot of people have lost money, क्योंकि क्या होता है कि there is a greed and there is a fear। ये दो जो एलिमेंट्स है, ये दोनों को जो आदमी कॉन्कर कर सकता है वो ही पैसा बना सकता है। ग्रीड कब आती है? जब हमारा शेयर 10% 15% बढ़ गया लेकिन हम उसको नहीं बेचते हैं तो हमारी ग्रीड आ जाती है, क्योंकि हमको लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और फियर कब आता है कि हमारे शेयर का प्राइस घट गया है, हम डर जाते हैं, अरे मेरा पैसा, क्योंकि दिस इज अ रियल लॉस। हमको लगता है जब तक मैं बेचता नहीं हूँ इट्स अ पेपर लॉस। नो, whenever a share price goes down it is a real loss। ये आप मत भूलिए, क्योंकि आपका लाख का 12,000 हो चुका है, अगर आप इसको बेचने जाओ तो आपको 12,000 ही मिलेंगे। सो इट इज a absolutely real loss, so don't think this is a paper loss। मैंने जब तक मैं बेचूंगा नहीं मेरे लॉस नहीं होंगे। So this is a real loss। So fear and greed, these are two factors which makes a trader lose money। जब भी मैं पहली बार स्टॉक मार्केट में गई थी, दैट वाज वे बैक इन 1982। तभी जब हमने ट्रेडिंग रिंग में हम गए तो बहुत सारे टाइल्स लगे हुए थे ट्रेडिंग रिंग के फ्लोर पे। तो हमें ऐसा बताया गया कि हर एक टाइल के नीचे एक स्पेक्यूलेटर को हमने दफनाया है। मतलब इतने सारे लोग, जितने टाइल्स थे इतने सारे लोग ये स्टॉक मार्केट में बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, इफ नॉट देयर लाइव्स at least their money and their assets and everything they have lost। and losing money can impact your families and it can impact your social status। तो हर एक तरह से आपको ये एक प्रेशर आता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप ये फियर ऑफ लॉस एंड ग्रीड, अगर हम कंटिन्यूस बेसिस पे इफ वी आर एबल टू cash our gains, then there is very little, like I told you, my father used to always, he used to keep a target, अरे 10 रुपया बना आज का, मुझे 5,000 रुपया मिला, I am happy। So every day he will make 4,000 5,000 2,000, he will exit and he will be happy because it keeps him occupied। So that way you, as housewife, I have seen a lot of housewives, you know, my family members also, they are in front of the screen, they are watching the CNBC and they will enter and exit। So this is one thing which lot of housewives also do of investing। Of course, I would advise you to do delivery based trading rather than just have day trading, because in day trading, profit or loss, there is a compulsion to exit the market on the same day। Now we will go on to derivatives। जैसे कि मैंने कहा कि इन कैश मार्केट यू हैव टू कंपल्सरीली टेक डिलीवरी, that way in derivatives market also similar trading is possible, where you can buy the index or you can buy futures or you can buy options। of course ये एक ही मीटिंग में मैं आपको डेरिवेटिव्स का पूरा जानकारी नहीं दे सकती। maybe I will take one more session or maybe the next session we will take on derivatives। but this time let me tell you that the simplest products that one can buy or sell is derivative index। that is the you know, you can buy the Sensex or you can buy the Nifty, and there is a futures contract of Nifty as well as of Sensex, and there is also a option you can write so far as Nifty is concerned। The advantage of doing similar trading in
in derivatives is that the derivative contracts are settled every month. Of course, there are weekly contracts also, but there are monthly contracts also. So, like in case of shares, when it is you have to sell off the same day, that is day trading, or BTST, which is overnight. In this case, you will have to you get a week or a month's time before which you can square off. Of course, the contract size is very large. Like for example, when I told you that in equity you can invest 25 or 50,000 rupees as margin, or you can actually do delivery based trading, whereas in derivatives the contract size run into lakhs of rupees. So the margin is how much? Margin is around is substantially more than what you do in a cash market. So it is advisable that maybe you may try your hand at derivatives market, and see, like you can write option also. Options are relatively safer because you pay the premium, and once you pay the premium, it is the end of it. The share price may go up or down. Your loss is limited. But if you write an option, it is very dangerous, which I will talk to you about writing options in my next meeting. And once you gain expertise, it is also possible. There are a lot of opportunities, calendar spread, like you can buy in 1 month and sell in another month, and you will, though both the transactions are fully hedged, you can get a difference between the two buying and selling points which are there. So in derivatives, you get more flexibility, but of course, derivatives are highly volatile, and a lot of action is in derivatives. So there are a lot of transactions happening in derivatives, and as a result of it, there is very high volume, there is very high liquidity, and obviously there is very high volatility which is there. So writing or not writing options, but buying or selling options, that means if you are expecting the share price to go up, then you may buy an option and pay the premium for that. Or if you expect the share price to go down, you may, or the index to go down, then you may sell an option. So these are some trading opportunities which are there so far as the derivatives market is also concerned. I am giving you this knowledge today about trading. Actually, I am not a personal advocate of trading, but what I feel is that you need to know and you need to experience as to what are the skills which are required for trading purpose. And unless and until you know about it, you have full knowledge and you have experienced it, it will be very difficult for you to either participate and make money, or you may just be आपको कोई बोलेगा चलो आप कर लीजिए और उसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. तो ये एक जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पार्ट लेते हो, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में कितने रिस्क एसोसिएटेड है वो आपको समझना जरूरी है, और सक्सेस के पैरामीटर्स क्या है. जैसे मैंने कहा कि डे ट्रेडिंग, ये एक इफ यू गो फॉर छोटे छोटे स्क्रिप्ट में, अगर आप पेनी स्टॉक्स में जाओगे तो उसका जो पूरा एक डायरेक्टर है वो कहीं और है, वो पूरे प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है. तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप डे ट्रेडिंग करने जाते हो तो वो फंसने वाली बात है. तो आपको यू रिमेन, इफ यू वांट टू डू डे ट्रेडिंग, यू बी विथ बिग स्टॉक्स, यू बी विथ द इंडेक्स, देन डे ट्रेडिंग there is a probability of success. ऐसा नहीं 100% सक्सेस होगा, but success probability is much higher in such a case. And it is not as if people don't make money on trading. Some people do make money on trading because they are disciplined people. If they are disciplined, if they have a fixed budget for which they are trading, if they are acting on whenever, if they are able to conquer their fear of their greed as well as fear, if they are able to operate within that band, then they can make money because they are disciplined people. So it is not as if no money is made. Actually 60-70% of the market is in trading only. So money is being made by some people, because after all it's a zero sum game. आज कोई
किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस भी होता है. So money is being made, but the point is that are you having the discipline and the knowledge to make this money? Then only you should venture into it and be attached to it. ऐसा नहीं है कि आज मैंने पोजीशन ले ली और मैं कहीं चला गया, उसके बारे में भूल गया और फिर वो डिलीवरी आ गई, शेयर का प्राइस डाउन हो गया और मेरा ध्यान भी नहीं है. तो ऐसे केसेस में प्लीज स्टे अवे, आपका ये काम नहीं है. अनलेस एंड अनटिल आप उसको कंटिन्यूअस अटेंशन नहीं दे सकते. अगर आपको कहीं बाहर गांव जाना है या तो आप नहीं ध्यान दे सकते, जीरो, एंड देन ओनली you move forward. So these are I would say the basic tips I have given you on how to be a successful trader. I would recommend that at least for your knowledge sake, you should try and do some kind of trading to get a knowledge about the do's and don'ts. If it suits your personality, maybe you can allot 10, 15, 20% of your investable surplus, which you can afford to lose. Strong underline. Please only use that money which you can afford to lose. Do not use the money which is committed to other things. So I think I will stop here. Whoever has any questions, let us spend more time on question answers, because people have lot of views on what trading is. Trading karna chahiye, nahi karna chahiye, speculation hai. There are huge amount of fantasies associated with trading. So I would like to take up the questions. Kindly put in the chat message so that we can read it and I can give the replies. So I have received a question as to what are the different types of traders. Of course, I have given one definition, which is day trader and BTST trader and a delivery based trader. But there are position traders, that is people who take positions for a long period of time. Then there are day traders, which I already told you, and there are scalpers. Scalpers are something which is close to arbitrage. There are almost more than 2 lakh people who are involved in the arbitrage or scalping activity. What these people do is they are relying on just a few minutes difference in the share prices. So they will buy and sell if the price is going up, or they will sell and buy. The return which they get is very minuscule. It may be 1 rupee, 2 rupee, but on a 10,000 share, maybe it is 20,000 rupees. But such transactions are done by people who are sitting throughout the market in front of the screen, and who are also not, I would say they are trading on behalf of the proprietor of the exchange. So as a result, they have to pay less charges. So such kind of people are the ones who will do scalping, and it is a full-time activity. Lot of chartered accountants, others, they also indulge into scalping, and it has been kind of. Another question I have is, what kind of personality is suited for trading? I think people who have a lot of patience, they are the ones who are suitable for trading. If they are panicking, and if they are, if you panic, then you are bound to make a loss. So whenever any situation comes before you, instead of panicking, what you need to do is you have to check whether this flip in price is momentary, or is it a long term thing, and then only you will take. So a person whose personality is kind of patience kind of personality and doesn't panic, such kind of people are suitable for the purpose of doing trading. Another important psychology of person who is bound to be successful in trading is, what is your attitude to money? I think when we are small, we often see कि हमारा मनी के तरफ एटीट्यूड क्या है. Like for example, if you have grown up in a family where you may not have very much money, but your parents' attitude to money is कि जो करना है वो करना है. Means if you have to spend this money and it is a must, then just go and spend it. That is one attitude. Or there will be people who understand, parents who understand कि ये चीज करना ही है,
but they will try to postpone the spending of the money for quite some time. तो आप अपने मतलब बच्चे जब माँ बाप से पैसे मांगते हैं तो बोले अभी नहीं, बाद में करूंगा, तो बच्चों का जो एक साइकोलॉजी ऐसे बनता है कि पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसे को मिलने में टाइम लगता है। तो ये जो एक साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत अच्छी किताब है। सो इफ वी आर what is how we are brought up, what is our relationship with money, that is very important. So if you are a trader and if you are making a loss, then if your attitude to money is ki bhai ye loss ho raha hai, let me be factual, just cut it and get out of it, that is one attitude to money. Another attitude to money could be अरे इसको रुकने दो, शायद आ जाएगा, there is hope, things will happen. So that is another attitude to money. So just sit down and think what is your attitude to money, and that will help you take decisions when you are trading in the market. At what minimum age can anyone enter? I think the age is at 18. You are an adult and you can enter into a contract as per the Indian Contract Act. So 18 is the age, but as I said, it is important to understand the pros, cons, understand your personality, understand how much money you have. All those things, I think if we put all those things and arrive at a amount, and then if we take a very informed decision when it comes to trading, I think that is very useful. In fact, these days, a lot of college students, recently I had employed 5 interns from a very well-known institute, and one of the girls who was just 21 or 22, she was a very active currency trader, and there was one boy who was an active crypto trader. So they were so much early in age. They had already started doing trading in these instruments for quite some time. So I believe that being conscious about your responsibilities is very important. As I said, the new generation wants to experiment, they want to try new things. So I feel that you should allow your children, hold their hand and help them because so many people in their class must be doing various things. So it is better if you can teach them what is the right way of doing things. Then you will not have any bad experiences, and people will learn in a very children will learn in a very healthy way. How is the volume on crypto? Honestly, I am not following crypto. According to me, crypto is there is no asset. Cryptos are not asset backed. They are not backed by any government. They are not backed by any guarantee. So personally, I am totally against trading in cryptos, and I do not follow personally cryptos also. But I do appreciate that there are young people who want to do crypto trading. So as parents, and I think we should properly guide them, and what principles are there for any trading in equities or anywhere else. You can trade in commodities, you can trade in currencies, any type of trading that you do. I think crypto is on similar lines. Of course, since it is not asset backed, there is the risk associated with crypto trading is multiple, so that you need to be conscious. And as I said, the bottom line is, can you lose the money? Ask yourself. If you can, then it's okay. Yeah, somebody is asking me, how do you differentiate MF and trading? Oh, MF is a very much an investment option, and it is nothing but pure investments which is done in MF. There is no trading involved as such. So far as MF is concerned, there is a 24-hour gap before which you will get your units and how many units will get. So trading is very difficult. Of course, underlying shares are underlying security shares. So maybe you can do delivery based trading, just like you buy and sell in the index. There is one very nice question which is there, that is from a person who says that what is the use of technical analysis in trading? I think you must
which is safe, MF or trading? I think, of course, trading, MF is safe any day. And trading is safe provided you follow the principles. Of course, you will get better gains in trading if you are very disciplined and you follow the principles of trading. Of course, going back to my technical analysis question, that technical analysis is a very useful tool. Maybe one of the days I will take a session on technical analysis and fundamental analysis, on how both of them can be used for the purpose of trading and investments. And technical analysis help you to time the market as to what is the right time to buy a particular share. But what is important is technical analysis is like looking at the rear view mirror and driving a car, because technical analysis, it throws out possibilities based on the past performance, price performance of a particular share. So technical analysis is useful. There are so many technical analysis experts. There are so many certification courses which are available for technical analysis. People have actually, people who have followed it earnestly have made money on technical analysis. It basically generates alerts. So I would request you that if you want to be a serious trader, then you should also look at studying technical analysis. Okay, for example, any share up 20%, up, book half profit and another profit we can hold. See, these are so many strategies, more and more strategies are available. This is a philosophy of investing कि मेरे को जितना प्रॉफिट हो गया वो मैं निकाल लूं और बाकी का पैसा रहने दूं. This is up to you as to what kind of strategy you want to adopt. But if the share is fully priced, why should you keep the balance money also? So you need to be careful. Everything depends on the performance of that particular share. So it may so happen that your share has doubled, so you think sell half the shares and baki ka sab profit hi hai if the share is going to do well. So it depends on the performance of the share, performance of the company. And if you think that तुमको ये share free कर देना है, ये करके and there is less risk and it increases your holding capacity and the share is good, then you will lower your risk and increase the probability of making money. So it's okay, you can follow. As I said, this is all matter of trial and error. जैसे आपको सूट होता है, आपको लगता है मैं इस तरह से पैसे बना सकता हूँ, तो please follow it and try it out. Because I strongly believe in everybody should experiment. Any couple of parameters you can guide how to determine a script to hold or intraday for a week. As I said, there are enough number of tips which are available on TV, written media. Though I would like to stick to those shares which, even if you are forced to take delivery, you have no problem in keeping the shares with you for a long period of time. Of course, I will not advocate like Mr. Warren Buffett, who says I should be able to keep the share for 25 years. I will not say that. But I would say that if the share is good enough and there is no manipulation, there is good corporate governance, then there is no external risk associated with the share except for company performance. Then you can easily go for any share. As I said, short-term shares I often describe them to the kanda bhaji which all of us eat. They are tasty only when they are hot. So such shares which are held for trading have to be held only for a very short period of time. If you are talking of intraday or a week, they are to be held for very short period of time. So it is important that the share is liquid and there is no manipulation. I think these two conditions are good enough for buying the share. Okay, there is one question on how does costs impact trading. I think when you are doing trading, the costs are very important. As I explained to you, there is STT, which is a security transaction tax. Broker will charge you a brokerage, though it may be very low. Stock exchange will have stock exchange charges. SEBI will have a turnover fee. So all these things put together on two legs, because you are buying and you are selling.
So do not lose focus of the expenses which are there. So if you try to turn your shares on very small margins, it will be very difficult for you to make money. So please be careful. Allow for at least 3 to 4% difference in the buy and sell price. Then only you will make money. At 1%, 2%, I do not think you will really make any money. Only the broker will make money out of the nominal brokerage which is charged to you. I think another important thing that all traders need to understand is that in stock exchange there are complaints on unauthorized trading, which is done by some employees of some brokers. So we would advise you that if you have left your margin, stock, money, or anything with the broker, please check your accounts on a regular basis. See to it that the transactions only which you have authorized and you have requested for are being executed in your account. It should not happen that you are trusting the broker, you have kept your money, shares, everything, but some employee, in order to show their performance, may trade on your account. So these complaints are received off and on by SEBI and exchanges also. So my strong advice to you is that keep a check on your ledger account, your transaction summary, and your depository transaction statements on a regular basis, so that you are not misguided or misinformed on the activity which is happening in your account. So this is a very important guidance that I would like to give to all of you. Any other questions? So I think all the questions have come. I will just summarize today's lecture. First thing is trading versus investment. Strongly recommend we should make investments. But still, if you want to trade, I think you need to take certain parameters, keep certain parameters in mind. Number one, trading. Please do trading and not speculation. That means make an informed buying or selling. So far as the share is concerned, don't just speculate and as if you are tossing a coin and you think the share price may go up or down. Number two, only trade that much amount as margin which you can afford to lose. Do not put your family money at stake or any loss which can disturb your family, your social status, your financial position. Do not invest such kind of money. Trading can be useful if, and you can make money if you work in a very disciplined manner, where you book your profits on regular basis, and if there is a loss also, you will immediately sell off your share and book your loss at the smallest value possible. So that is another thing. There is trading in cash market as well as trading in derivatives, commodity, currency, and other markets. The lot sizes are much bigger when it comes to trading in derivatives. Trading in cash market, a lot of small traders and investors, they are trading in the cash market. Stay away from penny stocks and stocks which are manipulated. If you can stay with big stocks and take price of the demand, take benefit of the demand and supply differences which is there, then such kind of trading can be very useful to you. Please experiment at least once on doing trading. If your children want to do trading, please hold their hands and guide them. Let them also experience as to how trading is done. And if they are inducted properly and they do a very safe kind of transaction, they will themselves realize that it is better to invest rather than trade. But I think this experience everybody should go through. So with that, I will close this session. Thank you very much for all of you. Today is Ganesh Visarjan Day. Lot of you must be busy in doing Ganesh Visarjan, though I see a lot of Marathi names on my screen. Happy Ganesh Chaturthi to all of you, and may the God guide us against all the speculation and other activities which are harmful to us. We stay away from all of them, and such beginner like trading, they stay away from us, or at least the losses from trading stay away from us. That is our prayer to Vignahartha. Thank you very much.